Next question. Sita Limited acquired rupees 7 lakh assets and rupees 80,000 liability of Geeta Limited. Okay, assets भी acquire किया है, liability भी acquire किया है for purchase consideration of rupees 7,20,000. Means जब asset और liabilities दोनों acquire किया जाता है, that means the company has taken over business. Sita Limited has purchased the business of Geeta Limited, पूरा assets और liabilities acquire करके. So हम सबसे पहले ये देखते हैं. See, assets are of 7 lakh, उसमें से liabilities हटाओ 80,000. So actually the payment should have been of 6,20,000. Assets minus liabilities का ही तो पेमेंट होता है, बट पे कितना किया है? परचेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 7,20,000 मीन्स सीता लिमिटेड हैज पेड 1 lakh more, and this 1 lakh more is nothing but payment of goodwill. Goodwill के लिए 1 लाख रुपए ज्यादा दिया गया है. That you will have to record in the entry of purchase of business. So this we'll do. Now reading the next part of the question. Sita Limited paid the consideration by issuing 5% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. Pass necessary journal entries in the books of Sita Limited. So first entry जो हम करेंगे वो है of purchase of business. So assets have a debit balance. Take the assets as it is. Sundry assets account debit. कितना assets है? 7 lakh. Okay. 2 sundry liabilities. How much liabilities has been taken over? 80,000. And now entry for purchase consideration. What has been decided to pay? 7,20,000. So we'll credit the vendor's account with 7,20,000. That is to Geeta Limited. Vendor's account. Okay. So how much has been decided to pay? 7,20,000. And the balancing figure will be of goodwill. So goodwill is an asset, debit करेंगे. Goodwill account debit. Balancing figure. 7,20,000 plus 80,000 is 8 lakh. 8 lakh minus 7 lakh. This is the other way to find out goodwill है या capital reserve है. Okay. So being business purchased. ये हो गई आपकी बिजनेस परचेज करने की एंट्री. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. पेमेंट कैसे किया है? कैश में किया है? नो. पेमेंट हैज बीन मेड बाय इश्यू ऑफ 5% debentures of 100 each at a premium of 20%. So let's decide what will be the number of debentures to be paid. So number of debentures is equal to nothing but purchase consideration upon nominal value plus premium. Purchase consideration कितना है? कितना पेमेंट करना है टोटल to the vendor, that is Geeta Limited, is 7,20,000. upon
nominal value what? Nominal value is 100 plus premium of 20. 100 पे 20% 20 होता है, so divided by 120. So you get 6,000 debentures. Okay. So now the entry will be गीता लिमिटेड, दैट इज वेंडर, जिसको अभी जस्ट आपने क्रेडिट किया उसको करो डेबिट. गीता लिमिटेड वेंडर अकाउंट डेबिट. कितना देना है? 7,20,000. सो विद द सेम अमाउंट 7,20,000. क्या दे रहे हैं आप? 5% डिबेंचर्स, राइट? सो 5% debentures and they are issued at premium. So to securities premium reserve account. Had it been issued at discount, तो आप डिस्काउंट को डेबिट करते, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इशू डिस्काउंट है तो एक्सपेंस है एंड वी ऑलवेज डेबिट द एक्सपेंस. एंड प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ इशू, इसका मतलब मैं 100 की चीज 120 में दे रही हूं, तो फायदा है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. 11th में पढ़ा था ये रूल हमने. सो इनकम है ना, प्रीमियम पे मैं कोई चीज इशू कर रही हूं, मतलब 100 फेस वैल्यू की चीज 120 में इशू कर रही हूं. सो प्रीमियम इज गेन, देयरफॉर क्रेडिटेड. ओके. अब कितना है? 5% डिबेंचर्स. 5% डिबेंचर्स, सी 6,000 मुझे डिबेंचर्स इशू करने हैं. सो 6,000 इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू 100. 5% डिबेंचर्स जो भी है या जो जितने भी रेट का डिबेंचर्स है वो हमेशा फेस वैल्यू से होंगे. सो टोटल 6,000 इंटू 100 इज 6 lakhs. एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज by the amount of premium 6,000 debentures pay, that comes up to 20 rupees. So 1,20,000. Okay. So this is nothing but purchase of business and payment in the form of debentures issued by the company. Hope you have understood the concept.